हेलो फ्रेंड, HSE एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द occupational health protections. So what is the occupational health protection? Occupational is a professional word used in the field of construction, rig sites, workers, how to protect the health of the workers in case of when he is working in the environment, hazardous environment, as a physical, chemical, biological, and different types of hazard present in the working environment where the workers work in in drilling rig sites especially. So that time the light, temperature, humidity, noise, different types of biological, physical, chemical hazard entrapped their bodies and affected the bodies, sunlight, different types, the hazards. So how to protect the body of the workers, this is known as the occupational health protection of the workers, especially in the rig sites work. When you are working in hazardous area, or you're in different chemicals area, so different types of chemicals affected your bodies. That time you should need to protect your body by the help of the PPs and take some safety precautions and use different types of risk assessment method such HERA, JSA, and different types of methods that identify the hazard and take some safety precautions and give the suggestion how to control that safety, and take safety precautions and reduce and minimize the hazards, and how to protect the workers, equipment, all these things, especially acids and chemicals. When you are discussing about the acids and chemicals, when the workers work in in mud mixing area, different types of chemicals, acids, and maybe fall down in his body. That time he should need to the personal protective equipment, especially the hand gloves, not asbestos, only the rubber hand gloves, dungarees, chemical apparent to any types of acid or chemical to protect the workers and burns of the skins. Benzene and mercury in laboratory staff handling these different types of substances, so they should need to examine 6 months after periodical medical examination of the worker after 6 months with the help of X-ray, and take some safety precautions, PPs, that the different types of benzene and mercury he will not affect their body. Hydrogen sulfide, if it is very dangerous, rotten egg smell gas, and 10 ppm it's not affected more your body, but above 10 ppm it is very hazardous and affected your body. And that time you should need to a portable gas detectors and detect the H2S, how much the percentage of H2S present in the environment if you are working in that such type of environment. Suppose that, so that time you should need a special type of SCABA, self-contained breathing apparatus. Not special, but you can bear the self-contained breathing apparatus because it is very dangerous gas, and maybe you are in troubling position if it come your by respiration in bodies. Now the second point is protection against physical agent. So different types of physical agent, especially noise, dust, humidity, temperature, these are the physical agents not explained by this book, but I can explain easily. Noise, especially the unwanted sound that interrupt your body, and that especially damage your cochlea of ear, and maybe the loss of temporary and permanent loss of your ear. So you should take the some safety precaution. You can wear the ear plugs and ear muffs to protect the noise in working area, high noise area. Radiation, different types of radiation, especially X-ray in hospitals, and during different types of radioactive substances used in logging, and radioactive microwaves during communication. So you should need to the personal monitoring with the film. Bandage is recommended, which should be made obligatory in such cases. So you should need to the some safety precaution, special PP to protect your body. Hot climate conditions, if the climate condition is hot during the drilling work, during construction work, the workers they should need to show
to protect your bodies, and they should need to use the PPs, especially heat cramps, execution, and different types, aprons also available, and use some liquids to maintain your body. Welding arc, especially when you are working in welding yard work, you should need to protect your especially eyes by the face shields, and special hand gloves and dungarees, all these things, helmet, all these things you should need, especially goggles wear also facial use. Handling of heavy equipments, when you are handling during drilling rig floor rigmen, topmen who are required to especially handle heavy loads in the in the position may experience low back pain. So it is not explained properly. I can explain it is properly. Whenever you are working on rig floor, especially, then you will attach the tongue. You will use the tongue and elevator to pull out running in pull out of running of the pipes. That time maybe the back pain is produced in the workers, that is a very especially hazard for the workers. Ergonomically you should need to maintain your safety, and maybe use some safety belts, abdominal safety belts, or you can purchase the safety officer responsibility, maybe give the requirement to especially for the floorman that this should need to bear the abdominal safety belts, and use tongue properly, and tongue and elevators, and they can use it in proper position to maintain the ergonomic pain. Now the next thing is sandblasting. Whenever you are working in sandblasting work, the dust is a common hazard. It goes your and by respiration in your bodies, and they will produce a special disease, pneumoconiosis of lungs. Your lungs may be damaged, and different types of problem comes in your body. So you should need to maintain all the hazards with the help of different types of PP methods, different types of equipment, different types of techniques, and then you can easily save your occupational health, that is known as the occupational health protection. मेरे भाई इंग्लिश में ही सारा एक्सप्लेन कर दिया, अब हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बुक के छोड़िए। अब मैं बता देता हूँ जो ऑक्यूपेशनल है, प्रोफेशनल वर्ड के लिए यूज़ किया था। हेल्थ आपका स्वास्थ्य, प्रोडक्शन कहते हैं सुरक्षा को। जब आप किसी भी रिग साइट पे वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन में वर्क करते थे, लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स के विभिन्न प्रकार के हजार्ड्स, केमिकल, बायोलॉजिकल, भौतिक, रसायन, जैविक आपके अंदर प्रवेश करते हैं, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। उस नुकसान से बचने के लिए आपको प्रोटेक्शन कवर की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। उसके लिए आप सुरक्षा उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जैसे हैंड ग्लोव्स है, हेलमेट है, सेफ्टी शूज़ है, और सारी डांगरीज है, एप्रेन है, केमिकल एप्रेन है, फेस शील्ड है, और सारी चीज़ें यू कैन यूज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे एसिड केमिकल्स है उनसे बचने के लिए, मैग्नीज मरकरी से बचने के लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उसके लिए आप स्पेशली पोर्टेबल गैस डिटेक्टर, पोर्टेबल कहते हैं, छोटे वाले हाथ के पकड़ के आप मेज़र करते हैं किसी गैस को, उसके थ्रू आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को मेज़र कर सकते हैं। डेंजरस गैस है, एग की तरह स्मेल आती है, और 10 ppm तक आपको बहुत कम नुकसान पहुंचाती है। 10 ppm से अब हो जाए तो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए तो ये इससे बचना मुश्किल हो जाता है। अगर ये रिलीज़ हो रही है, ये लीकेज हो गई है, तो स्पेशली सीधा विंड डायरेक्शन आपने हवा का रुख देखना है, और बहुत तेज़ी के साथ जितना हो सके भागना है, एज वी अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप नॉर्थ साइड को हवा चल रही है तो आपको इसका नॉर्थ का उल्टा साउथ की तरफ को भागना है, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में भागना है। द रीज़न इज़ बिहाइंड दैट, उसके पीछे ये कारण है क्योंकि हवा के साथ ये गैस रिलीज होगी जब, तो एयर के साथ हवा के साथ जाएगी, जिस डायरेक्शन में हवा जाएगी उस डायरेक्शन में ही जाती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे डायरेक्शन में भी नहीं जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता उस डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगी जिस डायरेक्शन में हवा तेज चल रही है, तो आपको उसके अपोजिट भागना है। और अगर आप सैंड के डायरेक्शन को नहीं देख सकते तो विंड शॉक ऊपर लगा होता है रिग साइड पे, वो आप उसके डायरेक्शन को देखिए, वो घूमता रहता है और वो बताता है आपको हवा किस साइड में चल रही है, उसके साइड से आपको तेज़ी से भागना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ नॉइज़। नॉइज़ क्या कहते हैं? ध्वनि को। ध्वनि प्रदूषण में क्या करना है आपको?
कुछ नहीं करना, ईयर मफ ईयर प्लग्स आप यूज़ कीजिए और प्रोटेक्ट कीजिए अपने गगल्स को, कान को आपने ईयर ड्रम होता है, इसके अंदर कोकिला होती है, ड्रम होता है अंदर कान के अंदर, वो जो है आपका डैमेज हो सकता है परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से भी और अस्थायी रूप से भी वो डैमेज हो सकता है। सिर्फ उसको ही प्रोटेक्ट आपको करना है, इसमें और ज़्यादा इतनी आपको जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अदरवाइज ENT ईयर नोज थ्रोट के अलग से स्पेशलिस्ट होते हैं, आई कांट गो टू डेप्थ ऑफ दैट, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। रेडिएशन क्या जो किरणें होती है एक्सरे की होती है, जो हॉस्पिटल में आप बार बार वर्कर का एक्सरे करा रहे हैं या आप लॉगिंग सब्सटेंसेज यूज़ कर रहे हैं या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियो एक्टिव में माइक्रोवेव कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो इनका सब पे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। उसके इफेक्ट को कम करने के लिए आप PP यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपने क्या यूज़ करना है, देखिए हीट क्रैम्प्स आते हैं आपको, एक्सक्यूशन आते हैं, और आपने डिफरेंट टाइप्स का लिक्विड आप वगैरह यूज़ करना है जो आपकी बॉडी फ्लूइड्स और साल्ट आते हैं, लीडिंग टू हीट क्रैम्प्स एंड एक्सक्यूशन। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कुछ लिक्विड्स भी आते हैं जिससे आपको पिलाया जाए तो आपकी बॉडी थोड़ा नॉर्मल रहती है, ठंडा रहती है, आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, और वो आपकी स्वीटनिंग जो आपके पसीना आ रहा है उसको मेंटेन कर देती है, ज़्यादा आपका टेम्परेचर हाई नहीं होता, और आर्टीज बेंस मेंटेन रहती है। ड्रिंकिंग एनफ वाटर विद साल्ट इन इट इज़, ये लिखा हुआ है ये, मगर मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली आपको जूस वगैरह